हेलो प्यारे बच्चों। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। हाउ मच कैन यू कैरी, इसका मतलब है आप कितना कैरी कर सकते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर आई वांट टू शो यू एन एक्टिविटी फॉर दिस। फॉर द एक्टिविटी आई हैव 2 bags, cotton and salt. Okay, so what I do, I just put some salt in a bag. In this bag there is a salt, and in the another bag I put some cotton. Okay, now just feel which one is heavier and which one is lighter. Yes, this bag has salt, in this bag has cotton. So just tell me which would be heavier and which would be lighter. Yes, the salt bag would be heavier, whereas the cotton bag would be lighter. Now I keep both of these 2 bags in water. Yes, after some time you feel the weight get changed. Now the salt bag becomes lighter, whereas the cotton bag becomes heavier. How could it happen? When I keep the salt bag into the water, the salt gets dissolved into the water and its weight becomes lighter. Whereas when I soak this cotton bag into the water, the cotton gets absorbed the water and it becomes heavier. Okay, you can do this activity at your home also. Now we will read a story about this. Read the story. How much can you carry? जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है कि आप कितना कैरी कर सकते हैं. So this is a story about a salesman of salt and a donkey. Name of the story is The Clever Donkey and His Heavy Sack. मतलब एक चालाक डोंकी और उसका भारी सैक यानी थैला. Sandesh has a donkey. Sandesh is a salt merchant and he has a donkey. ये एक सॉल्ट बेचने वाला मर्चेंट है और उसके पास एक डोंकी है. It carries sacks full of salt on his back. उसके पास बहुत सारा सॉल्ट है जो कि एक थैले में भरा हुआ है. On the way to the market they have to cross a river. जो मर्चेंट है वो अपना सॉल्ट एक टाउन से दूसरे टाउन बेचने जा रहा है और रास्ते में एक रिवर आती है. One day while crossing the river, the donkey slipped and fell into the river. एक दिन जब डोंकी रिवर को क्रॉस कर रहा था तो डोंकी का पैर स्लिप हो गया और वह रिवर में गिर गया. When it got up, the sack felt very light. जब वो उठा तो उसे जो सैक है वो बहुत ही लाइट लगा. I hope now you understand how the sack become light. Yes, the salt of the sack get dissolved into the water. The donkey was very happy. This also gave it an idea. Obviously, जब डोंकी का वेट कम हो गया, उसका जो है सॉल्ट बैग का वेट जब कम हो गया तो वो बहुत ही हैप्पी हुआ और उसको एक आइडिया आया. नेक्स्ट डे while crossing the river, the clever donkey decided to take a dip. अब जो डोंकी था वो जानता था कि अगर मैं इस सॉल्ट सैक को रिवर में डिप करूं तो ये लाइट हो जाएगा. इसीलिए उसने डिसाइड किया
कि वह पानी में डिप हो जाएगा। दिस टाइम संदेश अंडरस्टूड द डोंकीज ट्रिक, बट जो मर्चेंट था, जो सॉल्ट मर्चेंट था, वो इस चीज़ को समझ गया। नेक्स्ट डे संदेश पुट sack of woolen cloth in place of salt, and to teach a lesson to the donkey, what he did, he just put the woolen clothes at the place of salt. उसने कुछ वुलन के कपड़े उसमें रख दिए सॉल्ट के प्लेस पर। Now suppose what would happen then? Obviously the woolen clothes also absorb the water and they would become heavier. So I hope you like this story. Students, also write 2 things that become heavier on keeping in water and 2 things that become lighter on keeping in water.